Hello बच्चों, let us read this question. If a and b are real numbers between 0 and 1 such that the points z1 equals a plus iota, z2 equals 1 plus b times iota and z3 equals 0, form an equilateral triangle, then find the values of a and b. Now this question can be solved primarily using the concept of rotation. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट चाहिए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर्स में आपने पढ़ा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, थोड़ा सा रिमाइंडर दे देंगे. लेट अस से यू हैव थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लेट्स से you have the complex numbers z1, z2 and z3 such that z1 z2 का जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइन किया हुआ और z2 z3 का जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट है उनके बीच का एंगल को मान लेते हैं थीटा. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन जो है दैट टेल्स अस दैट z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z2, this will be equal to modulus of z1 minus z2 divided by modulus of z3 minus z2 multiplied by e raised to the power iota theta. ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन बेसिकली. और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि z1 और z2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाई मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2. सिमिलरली z2 और z3 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाई modulus of z3 minus z2. Now let us try to solve the problem using the concept of rotation. यहाँ पे हमारे पास we already have three complex numbers given z1, z2 and z3 और वो है एक equilateral triangle की vertices. तो let us draw the equilateral triangle first. So this is our equilateral triangle जहाँ पे मान लेते हैं this point is z3 equals 0. This point is z3 equals 0. This point is, let's say, z1 equals a plus iota, and this point is z2 equals 1 plus b iota. This is z3 equal to 0. So now by using the concept of rotation we can write that यहाँ पे देखिए z1 minus z3 divided by z2 minus z3. This is equal to modulus of z1 minus z3 divided by modulus of z2 minus z3 multiplied by e to the power iota times what. मतलब ये वाला एंगल क्या होगा. तो ऑफ कोर्स वी नो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल टू 60 डिग्रीज मतलब π/3 रेडियंस होते हैं. So simply this will be e to the power iota times π/3. अभी as you also understand probably z1 minus z3 का मॉड्यूलस जो है that is the distance, this distance. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में we know that side lengths are all equal, तो ये दोनों डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा. That means of course they are going to get cancelled out. So this is going to get cancelled. यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से z1 minus z3 will give us a plus iota minus 0 मतलब a plus iota. z2 minus z3 will give us 1 plus b times iota. This will be equal to cos π/3 plus iota sin π/3. तो cos π/3 plus iota sin π/3. क्यों? क्योंकि I think you also remember that e to the power iota theta, Euler's formula, Euler's form, this is equal to cosine of theta plus I times sin theta, जो बेसिकली Euler फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को कंबाइन करती है. तो नाउ यहाँ पे वैल्यूज बैठा के हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें. तो a प्लस आयोटा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस b टाइम्स आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद
cos 60 degree is basically half and sin 60 degree is root 3 by 2. So plus iota times root 3 by 2, which means a plus iota will be equal to, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, so you get 1 times half, that is half, plus 1 times I root 3 by 2 is I root 3 by 2, plus bi times half is I times b by 2, इसको लिख सकते हैं ऐसे, and bi times I root 3 by 2, अब देखो I times I is I squared which is -1, so minus b root 3 by 2. Clearly left hand side is represented in the form of standard form of a complex number, मतलब real part plus I times imaginary part. Similarly right hand side को भी हम लोग लिख सकते हैं, real part will be half minus b root 3 by 2 plus iota times b plus root 3 divided by 2. यहाँ से real part और imaginary part को अगर equate करते हैं, then we can clearly see that the real part in the left hand side is a and the real part in the right hand side is half minus b times root 3 by 2, and simultaneously एक ही साथ imaginary part on the left hand side I times, of course यहाँ पे 1 है, so that's 1 equals I times b plus root 3 by 2. तो as we can clearly see that right hand side से b का वैल्यू निकालना is much easier because directly हमें b का वैल्यू निकल जा रहा है यहाँ से. So from here we get cross multiplying by 2 equal to b plus root 3, and hence obviously b equals 2 minus root 3. तो b का वैल्यू हमें मिल गया, b equals 2 minus root 3. a का वैल्यू भी यहाँ पे b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से मिल जाएगा. So a equals half minus b root 3 by 2. Let us continue with that. So we have a equals half minus b times root 3 by 2. That is equal to half minus b का वैल्यू हमें क्या मिला था, 2 minus root 3. So उसको यहाँ पे बैठा दिया, 2 minus root 3 times root 3 by 2. So this is equal to half minus, so this will be 2 times root 3 by 2, that is root 3, minus root 3 times root 3 by 2, that is 3 by 2, of course, that is half, bracket को हटाने से minus root 3 plus 3 by 2. Clearly half plus 3 by 2 is 4 by 2, that is 2 minus root 3. तो हमें मिल गया a का जो वैल्यू है वो भी 2 minus root 3 है, and therefore finally we can say that the answer to this question will be a equals 2 minus root 3 and b also equals 2 minus root 3. This is how you get the answer. Also इसको याद रखना कि in the question it was mentioned that both the real numbers should be between 0 and 1, which is obviously satisfying with the obtained solution. 2 minus 1.732 definitely 0 और 1 के बीच में ही होगा. This is the answer to this question. I hope you understood it well. Best of luck.